आप लोगों को आ रही है मेरी स्क्रीन नजर? Yes, sir. अच्छा, we are beginning a new topic today from that book, which is Mechanical Engineering Principles. And this topic will be very brief. We'll only touch upon some conceptual issues. The detailed derivations can be actually read from the book. These are solved examples. So, but my goal of covering these examples is to actually touch upon some certain important issues. So the first thing, I don't know if you have heard this name. It's called D'Alembert's principle. Without knowing this name, you must have used this in some problem solving. So it's related to how you see Newton's second law. You're well aware of that. And in the original formulation, it is basically a dynamics problem. Yeah. So you know F is the external force, the net external force, and mass times acceleration. But sometimes it helps, and this is what D'Alemberts did. So what's important here is that the force in this original formulation is, I think everything changed again. So it's very strange that, yeah, okay. Okay, the original in the original formulation, only this side is the force. Okay, so what you mean by this is the effect of that force. Okay, so mass times acceleration. What D'Alembert did is that he believed that in some problems it helps to think of this also as a force. So if you bring this term to the left hand side, and then you see zero, and you remember you have the sum of some quantities, on the right hand side you have the zero, and now when you have such an equation with a zero, you can see this as a statics problem, क्योंकि balance आपको नजर आ रहा है ना, it's balance. So now the term ma, he referred to this as a force. So in literature you will see factitious force. ये factitious नाम आपने सुना है? अक्सर फिजिक्स के प्रॉब्लम में नाम आ जाता है. Some people call it inertial force. Some people call it reversed effective force. Now these are different names, but it is not a real force. It's important. It is not a real force. ठीक है? कोई एग्जाम्पल आपको आ रहा है याद ये नाम सुन के? इसकी मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ ना. Let's say you are sitting in a car or a vehicle, okay, and suddenly the car stops, or you apply brakes or whatever suddenly, okay. So what do you feel inside? आप inside आपके साथ क्या होता है बताएं जरा. सर पूरे मूव होते हैं, फोर्स फील होती है. तो you feel some force, okay. Now that force is not a real force. Real force यहाँ पे कौन सा है? रियल फोर्स यहाँ पे ये फ्रिक्शन फोर्स है, जो आपने ब्रेक्स लगाए हैं ना, ये रियल फोर्स है. ठीक है. Here it is your experience, and it appears that actually there is no force on you. You bump into something because of your inertia. Your body doesn't want to stop, and it has to stop. So out of that inertia you move forward. अब वो force नहीं है, ठीक है ना. तो लेकिन if you want to see this as a force, तो इसको आप inertial force कह लें, fictitious force कह लें. We will be using this concept in some of the problems, but you need to be aware that that is just a mathematical trick. Okay. अगर आपने उसकी सही मीनिंग देखनी है तो इट्स न्यूटन्स ओरिजिनल फॉर्मूलेशन, और उसमें ये फोर्स नहीं है, ये इफेक्ट है.
So now I'll now begin with problem 18.1. Again, we're not going to derive everything. So let's focus on the main problem. So let's say if you want to determine expressions for the frictional forces F1 and F2 of frictional forces, hence determine the thrust on each tire. अब ये context में आपको समझा दूं कि this is a vehicle, ठीक है? And let's say you want to turn around a corner. आप यहाँ पे जा रहे हैं ऐसे और आपको एक टर्न लेना है, ठीक है? और ये आपका जो ओरिजिन है, इसके अबाउट आपने एक टर्न लेना है. तो उस टर्न के लिए you have to produce friction. यहाँ पे ये इस टायर का और इस टायर का जो रोड के साथ कांटेक्ट है, here you need to, क्योंकि there is no other way, यहाँ पे inclined नहीं है, बिल्कुल horizontal plane है, ठीक है? It's just horizontal plane. ग्रेविटी यहाँ पे है नहीं, सो आपको वो जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है ना, if you are moving and you want to move in the circle, because at each point you are changing direction, so you do need a centripetal force. अब वो centripetal force यहाँ आएगा इस फ्रिक्शन से, ठीक है ना, because this is the origin or center of the circle, so you need that force to be inward. So ये दोनों जो friction forces हैं, they must be pointing to the left. और if you want to zoom it, so यहाँ पे भी force towards the left है और यहाँ पे भी force towards the left है, ठीक हो गया. Now because you also have contact with the ground and you have weight, mass times gravitational acceleration, तो इसका जो reaction है वो भी इनमें divide हो जाएगा. So R2 एक साइड पे, R1 दूसरी साइड पे. Now these are the things which we have solved many times in the portion, the statics part of this course. So one thing is clear, without getting into numerical derivations, values, one thing is clear that on each side, ये वैसे यहाँ पे दो टायर्स को हमने एक जगह शो किया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे भी दो को. So the upward force, the reaction to basically your weight, and the friction force, the resultant of these two will be the net force applied on the on each tire, and that is what you mean by the thrust. Okay, इस क्वेश्चन में जो determine the thrust है उसका मतलब ये है, ठीक है. और of course first part you want to know the expressions for F1 and F2. अब इसको solve करने के लिए क्या तरीका है? The central point to understand here is the centripetal force. You do need centripetal force, ठीक है. So which means that F1 plus F2 is the centripetal force, okay, needed to maintain this motion in circle. Now this must equal mass times acceleration, yeah, and that acceleration is the centripetal acceleration. You also know the expression for that, and that is v squared over r. और यहाँ पे r क्या है? This h. No, sorry, this h is different. R is from this center to the center of mass or center of gravity, so it's v squared over r. Okay, now this is one this is the main concept, and if you want to see this in the formulation of D'Alembert's, you can give a name to that fictitious force. तो ये जो साइड है, ये जो मैंने यहाँ लिखा है, ये तो सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया ना, सेंट्रीपिटल, सॉरी मैं जस्ट लिख देता हूँ सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, पीटल. तो इसको हम क्या कहते हैं? यू मस्ट हैव हर्ड द नेम, इस साइड को. And again, it's not a real force, it's just a fictitious force.
as explained earlier, इसको centrifugal force कहते हैं, आपने नाम सुना होगा, ठीक है. Now centrifugal force is that inertial force and it is not a real force, okay, but it helps you turn this problem into a static problem. अच्छा, किसी को याद आ रहा है कि if I want to find the expressions for f1 and f2 तो मुझे क्या करना पड़ेगा? Because of the fictitious force formulation or D'Alembert formulation, I turn this into a static problem. और static problem में आप moment balance और force balance apply कर सकते हैं. तो यहाँ पे force balance क्या होगा? I can now actually remove everything. No. Remove all the annotations. The advantage of introducing that f1 plus f2, yeah, minus ma, and you know a is centripetal. The advantage of this is that you can now also introduce the force balance. और force balance ये है कि mg और जो यहाँ पे r1 r2 है, you can set up a force balance between these two, and then you can set up a moment balance. Moment balance में ये है कि you can have moment balance about this point of contact. तो उसमें से R2 निकल जाएगा. You will have one moment for R1 times something, which is R. No, it is not. Which is L. Sorry. Yeah. So R1 times L, and then you have another moment mg times h. Yeah. mg times h, और R2 निकल जाएगा. And that if you set up a balance between these two, you can solve for you can solve for R1. Yeah, you can. So you solve for R1. You can similarly solve for R2, and that way you can derive expressions for F1 and F2. Of course, when you solve these moment equations for R1 and R2, let's say I know R1 and I know R2, okay? So now these two diagrams will then help you to combine R1 and R2 with force 1 and force 2, and of course you will have expressions for F1 and F2, okay? So, and remember, how do you get the expressions for F1 and F2? From this equation. So that way you can solve this problem. And the detailed derivation is given in the book. So let's see if we now in this, let me just try to highlight one important thing. Why do you need to generate these two forces, F1 and F2? Because it is a horizontal plane and there is no gravity which can help you. So if you want to have a turn without needing these two forces, and you want some help from gravity, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? You have to elevate one of these corners with respect to the other. तो इसको कहते हैं banking. आपने नाम सुना होगा, banking angle. Banking angle उस एंगल को कहते हैं जिसमें आप रोड का एक साइड एलिवेट करते हैं to get help from gravity, और फिर ये फोर्स आपको you see these two as components of gravity and you don't need any friction, तो आपको टायर घुमाना नहीं पड़ता. So this example actually gives you a hint towards that side of the story. So you have a railway train that is required to travel around a bend of radius r. So ये
आपका सर्कल का और वो सेंटर हो गया, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द ट्रेन हो गया, ठीक है ना, एंड यू हैव दिस रेडियस r एंड यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ v, ठीक है, स्पीड ऑफ v गिवन है. Determine the amount of the outer rail, the amount that the outer rail, the outer rail is to be elevated with respect to the inner rail to avoid an outward centrifugal thrust. वो जो thrust हमने last time discuss किया था उसको हमने avoid करना है, as shown in the figure. अब इसमें आपके पास चूंकि एंगल आ गया, बैंकिंग एंगल, अब ये सारा एनालिसिस आप इस प्रॉब्लम के लिए करेंगे. सो इसमें जाहिर बात है वहां पे mg was not doing anything, it was only balancing r1 and r2. Now a component of mg will be used in to produce their centripetal acceleration, and if you solve this problem it will turn out that the thrust on these two tires is zero, क्योंकि इस thrust की जरूरत ही नहीं है फिर, ठीक है. So that was all from these two. Okay, another type of problem which you can imagine. So we are now discussing different types of problems you can face when we deal with motion in circle. Okay, it's actually motion in a circle. So you can also have, let's say this is a center point and this is a point which moves, yeah, let's say uska mass m hai, and it is hanging with a string. So if you apply the principles of statics you can work out the free body diagram, और इसमें जारी बात है ये चूंकि external force away from the point है, so this reaction force from the string will be away from the point, and similarly these two must be opposite, क्योंकि कोई भी पॉइंट आप स्ट्रिंग पे ले लेते हैं वहां पे फोर्स बैलेंस इंपॉर्टेंट है, so these tensions must also be opposite to each other. And let's say the situation requires motion in a circle. So circle का radius r हो गया, angular speed omega हो गया. So if you want to determine an expression for the cone angle, this is your cone angle, yeah, because the motion seems to be in a cone, ये 3D में ये कौन बन जाता है आपका, because this circle is normal to the plane, this circle is a plane normal to this line, okay, so that's why it's a circle, it's a cone with this circle as a base and this as the normal for the econ. तो अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, again motion in a circle के लिए आपको centripetal force चाहिए, centripetal force or acceleration. Now if this angular velocity is omega, if you must remember that if this linear velocity or tangential velocity is v, the acceleration was omega times v. I'm now ignoring all the cross products, so I'm only writing the scalar values. And if you remember, you could have written this either as v squared over r or omega r squared, because you know v is equal to r omega, so you can either write it as v squared over r or v is, oh yeah, I think this should be omega squared, yeah, omega squared times r, yeah. This formula helps you to turn this either into this form or into this form. And of course the force balance can be established between mg vertical force और जो t आपका ये t है इसका vertical component आ जाएगा, तो t का जो vertical component है, vertical component उसमें sin theta cosine theta आ जाएगा इसमें. So that way you can solve this problem as well.
Now, if you solve that problem, let's say you work out all the expressions for the cone angle and the tension, you can use those expressions to solve this problem then, okay? Because this is a problem based on that diagram. So you are given omega, which is 90 RPM. The speed of rotation increases by 10%. How much does the mass of the pendulum rise? ओके अच्छा, यहाँ पे जो चीज इंटरेस्टिंग है वो उस प्रॉब्लम को देख के मुझे याद आ गया कि अभी थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की force. Now we know it's not a real force, but it is something which is experienced by anybody that is in a motion in a circle. So अब ये देखें यहाँ पे और आपको ये डायग्राम भी याद होना चाहिए कि जब आपके पास हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट होते हैं तो जो नेट फोर्स होता है वो एंगल पे होता है. अब यहाँ पे because of this motion in a circle, there will be a fictitious centrifugal force, and that will lead to a thrust force on this away from the circle, and essentially you will see an elevation. So the faster it moves, ये तो अभी एक सर्कल में है ना, but if you increase the angular velocity, it will settle to a new circle. Yeah. And if you decrease the velocity, it will settle to another circle. तो ये चीज आपने मेरे ख्याल में जो अगर आप पार्क में देखते हैं बच्चे जब वो घूमते हैं, क्या कहते हैं उसको, वो जो एक हॉरिजॉन्टल सर्कल में मूव करता है, उसमें देखते हैं कि वो that whole plane actually raises upwards when it gets moving. Have you noticed that thing? So that is also a consequence of this centrifugal force. Okay. And this is another type of problem you can imagine. You can have circular motion. ये जो पहले ये वाला example था, this was motion in a horizontal circle, and because the body was hanging from another point, so you saw the cone. Now in this case, this whole circle is in a vertical plane. That's why we can think of it as a vertical circle. A vertical circle may be you can have force balance between your weight and these tensile forces, and then you can combine it with centrifugal force, and you have all those kinds of expressions. So these are all different manifestations of the so we can now skip many of the examples. Initially I thought that I would solve these, but I think this part of the course can be skipped for two reasons. One, that we have already solved many static problems. So if you look at all these derivations, they're just a repeat of those static problems. Number two, the main focus of this was this D'Alembert force, okay? D'Alembert force. So what that does is that actually you turn a dynamic problem into a static problem, and once you have a static problem, आपको static के सारे force balance, moment balance, yeah, वो सारे आपके fingertips पे होते हैं. So the main topic which we want to discuss today is simple harmonic motion. This is actually the next chapter. You must have seen such figures in your previous courses, where the central idea is that you have a point which is moving in a circle.
Now, when you see this point moving in a circle, there are certain confusions which can come into your mind. You can think, okay, whether it's a circle, whether it's a horizontal circle, whether it's a vertical circle. Yeah. So you don't need to consider these complications because it is a point. And when you say it's a point, point abstract hota hai. वो पॉइंट चार्ज भी हो सकता है, मास भी हो सकता है, वो एक पॉइंट ऐसा भी हो सकता है कि जो कोई कोई उसका ना मास है ना चार्ज है, कुछ भी नहीं है. इट्स जस्ट एन एब्स्ट्रैक्ट पॉइंट. यू कैन थिंक ऑफ इट एज ए जियोमेट्री प्रॉब्लम. ज्योमेट्री प्रॉब्लम में आपके पास पॉइंट होता है और वो पॉइंट जो है ना, लेट्स से यू हैव अ लाइन, उस लाइन पे एक पॉइंट है वो मूव कर सकता है, एंड यू डोंट नीड टू be concerned about mass or charge or all the other properties. Okay, so here this is more of a you can think of it as a study of motion rather than um, other physical properties. अब इसको सिंपल हार्मोनिक मोशन क्यों कहते हैं आपके ख्याल में? So because I know you have studied this point moving in a circle, तो इसको आपके ख्याल में सिंपल हार्मोनिक हार्मोनिक क्यों कहते हैं और सिंपल क्यों कहते हैं? अगर कोई किसी को याद आ रहा है तो बता दें मुझे. ये फिजिक्स में पढ़ा है ना आप लोगों ने? तो नहीं याद? आप सिंपल हार्मोनिक का डेफिनेशन किसी को याद नहीं आ रहा? सर हार्मोनिक तो वो होता है ना जो टू एंड फ्रो मोशन हो. सॉरी सॉरी, दोबारा बताएं. सर हार्मोनिक तो वो होता है ना जो टू एंड फ्रो मोशन हो. अच्छा, टू एंड फ्रो मोशन हो तो हार्मोनिक है, ठीक है. that is अभी देयर इज नॉट कवर ऑल द पॉसिबिलिटीज बट इट इज अ गुड डेफिनेशन. और सिंपल आपके ख्याल में क्यों कहते हैं इसको? सो यू कैन थिंक ऑफ हार्मोनिक का जो के लिए जो ज्यादा मुनासिब वर्ड है वो पीरियोडिक. ओके, पीरियोडिक मोशन, जिसको आप टू एंड फ्रो मोशन कह रही हैं. टू एंड फ्रो मोशन इज ए स्पेशल काइंड ऑफ पीरियोडिक मोशन, क्योंकि टू एंड फ्रो मोशन के लिए जरूरी है कि वो एक लाइन में रहे ना. तो सर्कल, ये जो सर्कल में मूव कर रहा है ये तो टू एंड फ्रो मोशन ना हुआ ना, ये तो सर्कल में आ रहा है. ठीक है, इसका जो प्रोजेक्शन है वो टू एंड फ्रो है. सो पीरियोडिक मोशन इज अ बेटर टर्मिनोलॉजी. अब पीरियोडिक मोशन में सिंपल इसको बताने की क्या जरूरत है, क्योंकि पीरियोडिक मोशन कैन बी कॉम्प्लिकेटेड. मैं एग्जांपल दे रहा हूँ. आपके पास, आपने सर्किट्स का कोर्स तो पढ़ा होगा, उसमें आपने डिफरेंट प्लॉट्स देखे हैं ना, ठीक है. तो अगर मैं यहाँ पे एक स्क्वायर वेव बनाता हूँ, is it periodic motion or not? Yes, sir. तो इसको आप हार्मोनिक मोशन कहेंगे, इसको आप सिंपल हार्मोनिक नहीं कह सकते. इसी तरह ये हो सकता है, ठीक है, इसी तरह ये हो सकता है. So periodicity is not enough. We need a simple motion. और what do you mean by simple? उसके लिए of course there are many ways of defining simplicity. लेकिन जो I'll just give you one qualitative comment. You must have in calculus, so one thing is clear, that we are looking for simplicity, so and periodicity. So periodic motion, okay, and by simple we mean smooth. तो इसमें देखो ना, ये जो इसमें ये क्यों सिंपल नहीं है? क्योंकि स्मूथ नहीं है. इसी तरह ये भी स्मूथ नहीं है, ठीक है. तो कैन यू रिकॉल ए कॉन्सेप्ट फ्रॉम कैलकुलस which can be used to talk about smoothness? कैलकुलस में स्मूथ फंक्शन आप किसको कहते हैं?
फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहता हूँ कि ये स्मूथ नहीं है, तो क्यों नहीं है? ये तो मैंने बिल्कुल देसी बात कर दी ना। तो कैलकुलस में विच प्रॉपर्टी टेल्स यू वेदर अ फंक्शन इज स्मूथ और नॉट? यू मस्ट रिमेंबर इट यार। You must have used these terminologies, yeah? एक continuity होती है, continuous function, और दूसरा क्या? Differentiation. Differentiable. So differentiable and continuous. अब देखो स्क्वायर वर्ब में देखिए differentiable ही नहीं है कुछ जगहों पे। अच्छा, आप ये कह सकते हैं कि ये जो ट्रायंगुलर फॉर्म है, इट इज बेटर देन स्क्वायर फॉर्म, इट इज मोर स्मूथर देन दैट। लेकिन ये क्यों ज्यादा स्मूथ नहीं है? क्योंकि यहाँ पे तो ये डिफरेंशिएबल है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये इस जगह पे डिफरेंशिएबल क्यों नहीं है? क्योंकि इस साइड से ये इसका पॉजिटिव स्लोप है और इस साइड से इसका नेगेटिव स्लोप है। एक पॉइंट पे आपकी दो स्लोप्स नहीं हो सकते, सो दैट इज व्हाई इट इज नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, इसी तरह तो अब इसका मतलब यह है कि स्मूथ का मतलब डिफरेंशिएबल नहीं है। स्मूथ का मतलब यह है कि यू कैन डिफरेंशिएट इज एट एज मेनी टाइम्स एज यू लाइक। तो आपने देखा होगा ना, ट्वाइस डिफरेंशिएबल आपने देखा होगा, ट्वाइस डिफरेंशिएबल, थ्री टाइम्स डिफरेंशिएबल। स्मूथ का मतलब यह है आपको जितनी दफा आप उसको डिफरेंशिएट करें, यू विल ऑलवेज गेट, और उसके बाद वो जीरो नहीं होगा। ठीक है ना? क्योंकि देखो ना, आप ये भी कह सकते हैं कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये स्मूथ है। अब इसको डिफरेंशिएट करें तो क्या बन जाएगा? इसको अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो यू विल गेट अ फ्लैट लाइन, और उसके फ्लैट के बाद आप उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। सो दैट इज नॉट व्हाट वी मीन बाय स्मूथनेस। स्मूथनेस का मतलब ये है कि आप यू कीप डिफरेंशिएटिंग इट, यू कीप डिफरेंशिएटिंग इट, और उसके बाद जो है ना आपके पास वो वेरिएशन आ जाएगी। सो अब ये दोनों चीजें हमें चाहिए, हमें पीरियोडिसिटी भी चाहिए और हमें स्मूथनेस भी चाहिए। अगर हमें पीरियोडिसिटी ना चाहिए हो ना, सिर्फ स्मूथनेस चाहिए हो, so we you already know a function जिसको आप जितनी दफा डिफरेंशिएट करें, you will still get that smoothness। आपको याद होगा ये फंक्शन आपको याद है, ठीक है? इसको डिफरेंशिएट करें तो क्या आता है? ये आता है वापस। ये आता है, और अगर इसके साथ कोई कांस्टेंट लगा भी दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। नाउ you can differentiate this as many times as possible। तो ये, can I say that it is the smoothest available function, the smoothest of all functions? ठीक है, लेकिन इसमें क्या मसला है कि पीरियोडिक नहीं है ना। समझ आ गई? हमें स्मूथ भी चाहिए, पीरियोडिक भी चाहिए, तो उसको हम कहते हैं सिंपल हार्मोनिक। जो है ना, आप उसको मोशन कहते हैं when you are seeing this in a motion problem। मैथमेटिक्स में आप उसको मोशन नहीं कहेंगे, मैथमेटिक्स में आप उसको सिंपल पीरियोडिक फंक्शन कहेंगे। सिंपल हार्मोनिक, आप इसको सिंपल पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं उसको, पीरियोडिक फंक्शन। तो बेसिकली ये जो साइन और कोसाइन है ना, साइन और कोसाइन, दे आर those candidates which are smoothest as well as periodic। अब ये अगर आपने मोशन ये वेव्स आपने जनरेट करने हैं तो उसके लिए आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन चाहिए। ठीक है, so now it's easy to understand it from for a circle। Okay, so if I look at a sine wave or a cosine wave or a combination of a sine and cosine wave, now I'm just imagining कि what is it that brings periodicity। periodicity के लिए क्या जरूरी है कि किसी पॉइंट पे, because it has to be oscillating around this line, तो जब भी इस लाइन से दूर जाता है
So something must be bringing it back. So if it goes upward, something must be bringing it back. If it goes downwards, something must be bringing it back. And if it is near, then you don't need anything. ठीक है? तो ये सारी requirements के लिए जरूरी है कि what is that thing which brings it back? उसके लिए हमें क्या चाहिए? मैं आपको 3 quantities बता देता हूँ. एक है displacement, motion में. एक है velocity और एक है acceleration. ठीक है? So what is it that brings something back on a track? मतलब अगर आप सर्कल को देखें या टू एंड फ्रो मोशन को देखें, ठीक है, let's say there is to and fro motion about this point, so you move away from it, then something is bringing you back, then you move away from this, something is bringing you back. Okay, and if you are already there, then you don't need anything. तो आपको बेसिकली फोर्स चाहिए ना, और फोर्स पर यूनिट मास क्या हो जाएगा? Acceleration. So you need acceleration, और वो acceleration कैसे होना चाहिए? That acceleration must have an opposite sign, माइनस साइन उसका होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होना चाहिए, क्योंकि यू नीड दैट ब्रिंगिंग इट बैक. ओके, ये यू मूव दिस वे, द एक्सेलरेशन मस्ट बी अपोजिट. एक तो ये हो गया. दूसरा ये है कि अगर आप द फर्दर यू आर फ्रॉम दैट सेंटर, द मोर एक्सेलरेशन. आपको जितना आप ज्यादा डिस्टेंस होते हैं, उतना ज्यादा एक्सेलरेशन आपको चाहिए. And if you are already at the center, you don't need an acceleration. तो इसका मतलब ये है कि this acceleration must also be proportional to the displacement. ज्यादा displacement का मतलब ज्यादा acceleration. ठीक है? So if the displacement is, let's say, x, and if the acceleration is a, so it must be proportional to minus x. Minus is needed for periodicity, ठीक है, and this x is needed for smoothness, क्योंकि अगर इस x को आप किसी और चीज से रिप्लेस भी कर दें, x square या square rooted x or something else, you may get periodicity, but it will not be a smooth periodicity. ठीक है? अब इसको हमने कैसे कंफर्म करना है? लेट्स कंफर्म दिस फॉर maybe I need to open a blank page. Rough pages. आपने ये देखा होगा साइन, लेट्स से इफ आई स्टार्ट विद साइन x. ओके, साइन x तो मैं नहीं कहता, आपने ओमेगा टी देखा होगा ना, साइन ओमेगा टी, and let's say y equals sine omega t. So this can be your displacement, and this sine, because it's periodic and smooth, okay, and this omega is the angular velocity. So you differentiate this once and you get velocity. तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाता है? ओमेगा टाइम्स cos omega t. ठीक है, and the acceleration will be तो यहां पे क्या मिलता है मुझे? कोसाइन का माइनस, and you have one more omega, so omega square times sin omega t, and that sin omega t I know is also equal to y. So you see, you get the same thing. A is proportional to minus y. यहाँ पे अगर कोई यहाँ पे कांस्टेंट आ भी जाए a, तो वो कांस्टेंट इधर आता है, फिर वो इधर आता है, yeah, and then you get back the same thing. So that is the central idea.
Now, that was all mathematical, okay? Because we started from sine and cosine. अब यहाँ पे we need to establish that this motion in a circle of a point at a constant angular speed is indeed a simple harmonic motion. तो इसका सबसे important reason आप क्या देंगे? Let me just show it separately, okay? This is your circle. This is the center. और इस point पे आप कह सकते हैं कि यार इस पॉइंट पे तो ये it doesn't move away from the point, yeah. So how do you establish periodic motion? Sorry, that simple harmonic motion का जो condition है कि the acceleration has to be proportional to minus displacement. अब यहाँ पे displacement अगर सर्कल में है तो कौन सा है मुझे बताएं. आप ये कह सकते हैं कि displacement change नहीं हो रहा. Can you say that in a circle? Because it's a vector, so the vector keeps changing direction. ये vector change हो रहा है. तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपका जो ये जो condition होगा, that will be that the acceleration towards the center, the acceleration must be proportional to minus r. ये आपका r हो जाएगा अगर मैं इसको vector के form में दे दूँ. ठीक है ना? तो देखो ना, r is away from the circle and a must be towards the circle. So इसका मतलब ये है कि this must be centripetal acceleration. समझ आ गई बात? Centripetal acceleration is already towards the center and it is और हमने ये भी देख लिया था कि centripetal acceleration was equal to ये मैं अभी magnitude लिख रहा हूँ, ठीक है, vector नहीं लिख रहा. It was we could write it as v times omega or v squared over r or omega squared times r. ठीक है. अब चूंकि यहाँ पे ओमेगा कांस्टेंट होता है, ठीक है ना, सो ओमेगा स्क्वायर्ड टाइम्स r. So you can think of this as omega squared minus r. So you already get that minus sign emphasizes that it's towards the center and it's proportional to that length. But that is not how we usually want to see simple harmonic motion. We would also like to इसमें जो टू एंड फ्रो मोशन वाली बात है वो तभी है कि instead of following the whole circle, what if I just focus on the distance from one of these lines? Let's say if this is the horizontal line and I say, okay, what is the distance from this line as the point A moves, yeah, so the distance from this x-axis is also changing. Or you can also think of the distance from the y-axis, ठीक है ना. So if you can recall a bit of your trigonometry, it is very clear that this angle theta at any time must equal omega times t, yeah, and that omega, because we also know that if theta is 2 pi for the whole circle and omega is constant, so this time must be your time period. So this gives you an expression for the time period. Okay. Now similarly, you also know that the vertical displacement of point A from the x-axis is simply, if the radius is r, so it will be r times sine of theta. Okay, r times sine of theta, and we know theta is r times sine of
theta is omega t. Okay. Now this theta is omega t is required for constant. We know the angular speed is constant. So the angle. Hello. मेरी class. Now here from this we can definitely go for velocity. So the velocity. Now I'm focusing only on one line, vertical line. Okay, this is the center, and this is the displacement from the center, and I'm now defining velocity. So velocity will simply be dy over dt. So it's r times cosine of omega t, omega. It's just like I did in the previous discussion. And if I accelerate, if I differentiate this even further, so the acceleration y, I can just say vy, ay in the y direction. It is dvy over dt, और यहाँ पे आपके पास minus omega squared r sin omega t, and r sin omega t I know is y, so minus omega squared y. So you see, we get the same expression. A is proportional to minus y. So definitely the displacement from the x-axis is also simple harmonic motion. If we do it for this for the displacement from the y-axis, अगर मैं उसको कह दूं x equals r cosine omega t, उसके लिए भी I can show that a y है उसमें मैं x कहता हूँ, x is proportional to minus x. So this will be the foundation. जो इस स्लाइड की सिंप्लिसिटी वो ये है कि जब भी आपके पास सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, although our simple harmonic motion will be in a single line, but we can see this as related to motion of a point in a circle. So let's use this concept to a mass spring system, and just write our criteria that the acceleration must be must be proportional to minus displacement. We will use this criteria for simple harmonic motion. So let's say the spring stiffness is K, you know that, and this you have a block of mass M. So now this mass M is only interacting with the spring. There is no external force. Okay, no external force if this whole is your system. ठीक है, mass और spring दोनों आपका system है. But if I think of the mass as my system, free body diagram में mass के लिए बनाता हूँ, तो mass पे कौन सा force लगेगा? Let's say इस point से ये इतना displace हुआ है, ठीक है? So restoring force spring का क्या होता है? That will be, the spring force will be Fk, force from the spring would be minus kx. ठीक है, और इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस डायरेक्शन में x. तो अब मैं न्यूटन लॉ अगर लिखना चाहता हूँ, न्यूटन लॉ क्या, हाउ डू आई राइट न्यूटन लॉ? The net force must equal m times the acceleration. So let's just apply this. What is the net force here? Minus k x, because that is the only force on this mass, rigid body of mass m. The spring force is the only force. Mass इसका m है, and what is the acceleration? Remember इसकी velocity क्या हो जाएगी? p is equal to x dot, yeah. So acceleration क्या हो जाएगा? v dot, and that is m times x double dot. ठीक है, और आप चाहें तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, m times a भी लिख सकते हैं.
So because it already, even here we can, even if we don't write these expressions, even if we write this MA here, this already can be written as A equals minus K divided by M times X. So can you see that this is simple harmonic motion now? Why? Because the acceleration is proportional to the displacement and with that negative sign. अब यहां से कोई आप गेस कर सकता है कि इसका ओमेगा क्या होगा? How do we set that up? Previous slide पे हमने किया था ना कि if we see this as periodic motion sine और cosine, तो हमें वो जो प्रोपोर्शनैलिटी है वो किस फॉर्म में नजर आनी चाहिए? ओमेगा स्क्वायर्ड में. तो इसका मतलब ये है कि this, although we have this equation for the spring, but we know that this must be of the form minus omega squared x. So which means कि जो आपका omega squared है angular velocity, that must equal k over m. So you can write an expression for the angular velocity, ठीक है? And if you want an expression for the time period, वो भी आपको पता है, वो क्या है? 2 pi over omega, and that means 2 pi, if you bring this into the denominator, it will be m over k square rooted, ठीक है? This equation comes from that analogy with the circle. We want to see all these different examples as special cases of a point moving in a circle. तो अब यहाँ पे k over m specific example है, लेकिन हमें पता है कि अगर इसको हम सर्कल वाली प्रॉब्लम पे मैप करें तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर जो है ना वो यहाँ पे आना चाहिए. So this is how you can map the problem. Acha, here you have another example, and this is a mass spring, a vertical mass spring, and let's say this is its rest position. यहाँ से स्टार्ट करता है, ठीक है? तो इस जगह पे even if it is not moving, इसका जो बैलेंस अगर हम लिखना चाहते हैं तो the gravity mg, जैसे अगर इसका मास m है, must be balanced by the restoring force k times y naught. These two must balance each other. That's why ये इक्विलिब्रियम में है, ठीक है ना? डाउनवर्ड फोर्स, अपवर्ड फोर्स, ठीक है? So you need that balance. But if it moves, let's say if it is displaced, so इस पॉइंट पे अगर आपने इक्वेशन लिखना है तो उसके लिए आपको पता है कि the rule is simple. The sum of all forces must equal mass times acceleration, ठीक है? So now the sum of all forces, in this case, spring force is the only force. So the spring force will be, I can say F spring on the mass will be minus k times, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना है? y naught प्लस y, क्योंकि इसके साथ ही ऐड हुआ है ना. And if I want to use Newton law now, so m a तो यहाँ पे दूसरा फोर्स भी है ना, mg भी है, सॉरी, जो F ग्रेविटी है वो है m times g. So you add these two, okay? So m times a will be equal to mg minus k times y naught plus y, ठीक है?
नाउ रिमेंबर mg मस्ट इक्वल ky नॉट, तो ये फोर्स इसके साथ कैंसिल हो जाएगा. So basically you get ma equals minus ky, but ma you already know that if you want to relate it, it is the derivative of velocity and v is the derivative of displacement, so v double dot. You already can relate that, but we got our main equation, which is a equals minus k over my. सिंपल हार्मोनिक मोशन का कंडीशन हमें मिल गया, माइनस साइन भी मिल गया, प्रोपोर्शनलिटी भी मिल गई, और यहाँ पे अगर हम चाहें तो हम इसको दोबारा मैप कर सकते हैं के ओवर एम पे. तो देखो ना, हमें it doesn't matter whether we are dealing with a vertical spring or a horizontal spring, we still get that equation that omega square is k over m, और यहाँ से हमें ओमेगा का एक्सप्रेशन भी मिल सकता है k over m square rooted, और टाइम पीरियड का भी मिल सकता है 2 pi over omega. We can use we can use the same model for both the uh, different examples. Now this example, we can apply those concepts on this example now. So you have a mass of 1.5 kilogram and it is attached to a vertical spring. Okay, so you have mass and it is attached to a vertical spring. When the mass is displaced downwards, it displaced downwards हो रहा है, ठीक है, a distance of 55 millimeter. So ये इतना डिस्टेंस इसने डिस्प्लेस किया हुआ है, और ये स्टैटिक है, ठीक है, ये वही पोजीशन है जो मैंने बताया था जिस पे बैलेंस इनिशियली बैलेंस्ड होता है. So you have this initial displacement 55 millimeter from its position of rest. Okay, इसलिए उसने static लिखा हुआ है. It is observed to oscillate 60 times. अब यहाँ पे जब ये static था तो there was no motion, but the moment you displace it from that by this distance, it starts to oscillate और वो simple harmonic motion शुरू हो गया. ठीक है, अब उस simple harmonic motion के बारे में हमें क्या बताता है कि you have it oscillates 60 times in 72 seconds. Okay, now 60 times से हम क्या कैलकुलेट कर दें 60 times से, क्योंकि हमने यहाँ पे अभी दो चीजें डिस्कस की अभी तक ना. We have been talking about angular velocity and we have been talking about time period, which is 2 pi over omega. But there is another thing which is called frequency, and that frequency is 1 over t, and that is omega over 2 pi. Now frequency tells you how many times you oscillate. So if it says observed to oscillate 60 times, it means that the frequency is 60. No, the frequency will be 60 only if we know that it is in 60 seconds. Wait a minute. It is observed to oscillate 60 times in 27 seconds. So यहाँ से हम t कैसे कैलकुलेट कर दें? 60 times maybe we should use our concept of units here. Okay, so if I divide 60 times का कोई यूनिट नहीं है, ठीक है, 60 बेसिकली टाइम्स को मैं लिख सकता हूँ 60 साइकिल्स, 60 साइकिल्स, ठीक है. 60 साइकिल्स को मैं अगर लिख दूं कि ये 60 साइकिल्स कितने टाइम में हो रहे हैं,
72 seconds में हो रहे हैं. So this will give me the frequency. ठीक है. क्योंकि इसको अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ 60, if I divide 60 by 72, 60 divided by 72 से जो मुझे नंबर मिलता है, that number will be cycles per second. Yeah? Cycles per second, and that is what I mean by frequency. So frequency यहाँ से मुझे मिल गई. So it also means that I can now calculate omega, which is 2 pi f. ठीक है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ. सो यही जो आंसर है मुझे यहाँ पे मिल जाएगा 2 पाई टाइम्स 60 over 72. This will be radians per second. And if I want, I can also calculate the time period. But let's see what is being asked here. Determine the periodic time. ठीक है ना, time period basically जानना चाहता है. What is time period? Time period is simply 1 over f. हमें इस चक्कर में जाना नहीं चाहिए था. We know frequency, so time period will be 72 divided by 60 seconds. ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर दें. क्या आंसर आता है इसका? 72 divided 60 का 1.2 seconds. 1.2. Yeah, 1.2 seconds. ठीक है. Now the stiffness of the spring. Stiffness of the spring को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? This time must be equal to, जिस तरह पहले हमने कह दिया था कि उसमें 2 पाई और m over k आ रहा था उसमें. ठीक है. If we go back, ठीक है ना, ओमेगा is k over m square rooted and t is 2 pi over omega. क्योंकि डिनोमिनेटर में आ जाता है तो k over m की जगह हम लिखेंगे m over k. ठीक है. अब यहाँ पे मास हमें गिवन है, कितना है मास? 1.5. So in this equation k is the only unknown. So I can solve this equation for k. Left side भी पता है, mass भी पता है, 2 pi मुझे पता है, and I know how to deal with square root. So spring constant भी मिल गया मुझे, stiffness of the spring. अब ये a और b आसान थे, ये मुश्किल है. The time taken to travel upwards a distance of 25 millimeters for the first time. Okay. The time taken to travel upwards a distance of 25 millimeter, ये है ना, ये इधर से 25 मिलीमीटर, यहाँ तो आ गया, लेकिन यहाँ से 25 मिलीमीटर अपवर्ड जाने के लिए इसको कितना चाहिए डिस्टेंस? अब ये 25 तो इधर से है ना, तो सेंटर से कितना हो जाएगा? इफ दिस टोटल इज 55, so from the center it will be 30 millimeter. So basically you want to know the time taken to reach this point. अब यहाँ पे हमें एक बात क्लियर है कि because it is simple harmonic motion, I want to give you a simple method. और आप चाहें तो आप इसने यहाँ से जो सॉल्व करने की कोशिश की है ना, so he has tried to map this problem into a circle. क्योंकि आपको पता है any two and from motion can be seen as if it is projected from a circle. और सर्कल में आपको पता है कि अगर उस सर्कल का, चूंकि ये स्टैटिक था, तो you can think of this as your center, और ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन है, सॉरी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, तो ये आपका रेडियस हो जाएगा. 55 मीटर विल बी योर रेडियस. और आप फिर ये कह सकते हैं कि अच्छा अगर ये इसका यहाँ पे आ जाए तो ये प्रोजेक्शन बन जाएगा. यू कैन यूज ऑल योर ट्रिग्नोमेट्री टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. वो उसने किया भी है, बट आई कैन गिव यू ए सिंपल मेथड. वो ये है कि लेट मी जस्ट declutter this and I'll show you how you can solve this in your own way.
So we know, because we know, so first I'll write down that we, in part A, we have calculated t, which is 1.2 seconds, and that gave us the value of k. In part B, which is 2 pi m over k. So let's say I will know this value, and now I want to solve part C. Now, because I'm interested in the time taken, so time taken, and I am given y, the vertical distance. Now, because I know it is simple harmonic motion, आपने वैसे डिफरेंशियल इक्वेशन भी सॉल्व की होंगी ना, उसमें इस टाइप का इक्वेशन आपको मिलता है उसमें. If I have something like that, you must have solved these equations. Yeah, remember there is a plus here, and omega squared का मतलब यह है कि नेगेटिव नहीं हो सकता. इसको जब भी आप सॉल्व करते थे, इसका सोल्यूशन किस फॉर्म में होता था? It will be a combination of cosine and sine. So some constant here, some constant here, और ये constants कहाँ से आते थे? Remember? When you were solving these differential equations जिसमें डबल डेरिवेटिव है, सिंगल डेरिवेटिव नहीं है, तो ये इनिशियल कंडीशन से आते थे. ठीक है, इनिशियल कंडीशन से. सो हमें चूंकि टाइम यहां से कैलकुलेट करना है ना, द टाइम टेकन टू ट्रेवल अपवर्ड्स, इसका मतलब यहां से आपने टाइम स्टार्ट करना है. तो यहां पे अगर इसको आप टाइम जीरो कह दें, तो टाइम जीरो पे आपका वो क्या है? डिस्प्लेसमेंट y naught at time zero is 55 meters, which is equal to r as well. Okay. And because this is the full displacement possible, so आपका, मुझे ये बताएं कि ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन मैं लिख रहा हूं, a कोसाइन प्लस b साइन, इसमें से कोसाइन होगा या साइन होगा, या दोनों होंगे? देखो ना, आप देखो, जब आप साइन की बात करते हैं, साइन जीरो पे जीरो से स्टार्ट हो रहा है, सो साइन नहीं हो सकता. ये कहां से स्टार्ट हो रहा है? मैक्सिमम से स्टार्ट हो रहा है, सो इट मस्ट बी कोसाइन. ठीक है, इट मस्ट बी कोसाइन. और कोसाइन की इनिशियल वैल्यू क्या है? y नॉट है. सो इसका मतलब यह है कि आई कैन नाउ राइट डाउन, because I know it's simple harmonic motion, and when I know simple harmonic motion, it must be cosine or sine, and I established that this equation for y of t must be equal to y naught sine omega t. No, sorry, cosine omega t. Cosine omega t. क्योंकि this will satisfy the initial condition. इसमें आप अगर मैं y of 0 पुट करता हूँ, तो y of 0 will give me y naught. अगर मैं यहाँ पे साइन लेता हूँ तो वो भी गलत होगा, क्योंकि y of 0 I'll get 0. और अगर मैं यहाँ पे कोई कॉम्बिनेशन लेता हूँ, कॉम्बिनेशन a कोसाइन ओमेगा t प्लस b साइन ओमेगा t, वो भी गलत होगा, क्योंकि y of 0 will not give me y naught. उसके लिए जरूरी है कि जो मेरा सोल्यूशन है, it must be of this form, cosine omega t. Remember, omega I already know. ओमेगा इधर से मुझे पता है m over k. So मैं अगर यहाँ पे लिख भी दूं कि it's basically टाइम, और ओमेगा के लिए मैं लिखता हूं k over m square rooted. And remember, I know k as well as m. ठीक है, ये क्या था? k, ये था ओमेगा, that was omega, sorry. अब इस इक्वेशन में क्या अननोन है? t is the unknown. I only need to solve this equation. क्यों? इस इक्वेशन में yt मुझे गिवन है, वो क्या है? 30. रिमेंबर, आपने ये 25 नहीं करना. नहीं, सॉरी, एक सेकेंड. अगर आपने इसको टाइम जीरो कहा हुआ है,
टाइम 0 आपने इसको कहा हुआ है, तो फिर ये 25 मीटर होगा, 25 मिलीमीटर हो गया। नहीं, डिस्टेंस आप मेजर करते हैं इधर से, सॉरी, टाइम आपका ये 0 है, लेकिन डिस्टेंस आप यहाँ से मेजर करते हैं सेंटर से। सो ये आपका y है। इफ दिस इज योर y, then y of 0 is r, which is 55 millimeter, and y of t, जिस जो अननोन टाइम है, वो है 25 नहीं है, वो 33 है, 30 है, 30 मिलीमीटर, क्योंकि 25 यहाँ से मेजरमेंट हो रहा है और आपने सेंटर से इसको मेजर करना है। सो 30 millimeter, y naught is 55। अच्छा, इसने यहाँ पे मिलीमीटर ये है, अच्छा मीटर नहीं है, क्वेश्चन में मिलीमीटर गिवन है। सो 55 मिलीमीटर और कोसाइन ऑफ t, और ये दिस क्वांटिटी इज नोन, सो यू जस्ट सॉल्व दिस इक्वेशन फॉर t एंड यू गेट योर आंसर, ठीक है। एंड द वेलोसिटी एट दिस पॉइंट, उस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, यू जस्ट डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड यू गेट वेलोसिटी। तो डिफरेंशिएट में ये कोसाइन साइन हो जाएगा, और इसके साथ ये k/m स्क्वायर रूटेड भी आ जाएगा इसके साथ, ठीक है। कितना टाइम हमारे पास रहता है सर 1 मिनट। अच्छा, तो ठीक है, ये पेंडुलम वाला टॉपिक हम नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। तो आप P लिखते हैं आप।